In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Prophet Muhammad ﷺ said, knowledge which does not lead to Allah is ignorance. I am Mr. Fayaz Mahillah. I am working as a teacher at Higher Secondary School Nihama Kulgam, and I am also teaching zoology at Sublime Coaching Institute Kulgam. Now, today I will deliver fourth lecture about cell biology of class 11th, that is prokaryotic cell. Yesterday we have discussed prokaryotic cell, and prokaryotic cell is still continue. Today we will discuss its remaining part. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Continue. Rahat banaye as prokaryotic cell. You draw this prokaryotic cell again. Rahat banaye mein tay. You see prokaryotic cell che. Ach varya parts asan. Athon mein rahat. Ach nebir kin asan. Mucilage chat asan. Tat mun capsule to slime layer asan. Tam pat cell wall asan. Cell wall asan. Tam pat cell membrane asan. Cell membrane cha asan. Tam pat padya was ach andra amik ground substance asan. This is called a cytoplasm. Okay. The path vanya mein tay is that ye cytoplasm cho atma major cell organ list dem absent asan. Path vanya mein tay atma vanya mein prat zu cheez parts of cytoplasm. Yani cytoplasm mus kus part cho. Me vanya rat ach part so ribosomes. Ye vanya was rat. The B vanya was rat gas vacuoles. Gas vacuoles. Shabash. So yotay voite is rat kis lectures mans. Now we will continue this prokaryotic cell. The next component which is present in cytoplasm. Suppose yemano is issue ribosome. Yon is rathi ribosome. Atmal one is atmachasan B gas vacuoles. Atmach gas vacuoles asan. Number next part which is present in prokaryotic cell, that is called a mesosome. Mesosomes. You see mesosome chasan. Ye mesosome kya ho? Ye mesosome chasan infolding of cell membrane. You cell membrane chasan ach infolding asan. Tas chvanan mesosome. Mesosome. Mesosomes kya gaye bhai? These are the infoldings of cell membrane. Mesosomes. Mesosomes are the infoldings of cell membrane. Usually cell membrane chasan ach infolding gasan. In invagination gasan ach andar kon fold banan. That is called a mesosome. Why sawal? Yem mesosomes chasan. Yem chasan mukhtalif forms. They are present in the form of yem chasan vesicle forms. Vesicles, ya chasan tubules, ya chasan lamellae. Lamellae. In mesosome chasan in the form of vesicles, ya chasan in the form of tubules, ya chasan in the form of lamellae. Okay. Why sawal? Yemen mesosomes ch zai type asan.
mesosomal. Mesosome is an cho, iman cha zakasam asan, mesosomes. Ago septal mesosomes, the beago lateral mesosomes, septal mesosomes and lateral mesosomes. Now what is septal mesosome? Septal mesosome goes to mesosome is an asan cho in contact with nucleoid. Yes, chitan asan nuclear material, that's one nucleoid. Yus aمیُک آسان چھُ genetic material, nucleoid. تہٕ یہِ چھُ nucleoidس کُن آسان attach. یِم septal mesosomes. گوٚو أسۍ لیکھو they are in contact with nucleoid. یِم چھِ nucleoidس کُن آسان in contact یِم septal mesosomes. تہٕ لہذا کٔرِتھ چھِ یِم کران کٲم چونکہِ وۄنۍ وَنہٕ تۄہہِ بہٕ بٕتھِ پَہم یُس یہِ nucleoid چھُ آسان اَتھ چھُ nuclear membrane آسان کِہیٖنۍ لہذا کٔرِتھ گژھِ نہٕ اَتٮ۪ن dislocate گژھُن أمِس چھِ septal mesosomes کُن چھِ یہِ آسان in contact تہٕ یہِ چھُ اَتھ تھاوان proper position پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ اَتھ dislocate دِوان اَتٮ۪ن گژھنہٕ کِہیٖنۍ اَتٮ۪ن لیکھِو تُہۍ septal mesosomes keep nucleoid in proper position. Septal mesosome یُس زن چھُ یہِ چھُ nucleoidس تھاوان in proper position. یہِ گوٚو اکھ تہٕ بیاکھ گوٚو lateral mesosomes are not in contact with nucleoid. Lateral mesosome یُس زن چھُ آسان یہِ چھُنہٕ in contact with nucleoid آسان کِہیٖنۍ یِمن وَنان lateral mesosomes. وۄنۍ چھُ سوال یِم mesosome کیٛاہ کٲم کارا چھِ کران یِمن mesosomen منٛز چھِ آسان respiratory enzymes تہٕ یِم چھِ کران respiration. Mesosomes contain respiratory enzymes and thus help in cell respiration. چونکہِ مےٚ ووٚن وُنۍ تۄہہِ اَتھ منٛز چھُیی نہٕ mitochondria آسان تہٕ لہذا کٔرِتھ یِم respiratory enzyme چھِ آسان یِم چھِ آسان mesosomen منٛز تہٕ لہذا کٔرِتھ چھُ mesosome کران کٲم یہِ چھُ کران cell respiration. گٔے ترٛےٚ پارٹ یِم مےٚ ؤنۍ سایٹوپلازمس منٛز چھِ آسان ژوٗرِم پارٹ اوس اَتھ منٛز بیاکھ پارٹ آسان تِمن چھِ وَنان chromatophores. یہِ chromatophore کیٛاہ چھِ آسان یِم چھِ pigment containing structures آسان they are pigment containing structures present in یِم چھِ آسان green bacteria منٛز چھِ آسان یِم pigment containing structures یِمن چھِ وَنان chromatophores. یِمن chromatophore منٛز چھِ pigment آسان تہٕ لہذا کٔرِتھ چھِ کران یِم photosynthesis. They help in photosynthesis. کیٛازِ green bacteria چھِ کران photosynthesis تِمن منٛز چھِ یِم pigments آسان. This is the fourth component present in cytoplasm of prokaryotic cell. The number next component is اَتھ منٛز آسان چھُ تِم گٔے food reserves. اَتھ منٛز چھِ food reserves آسان. Food reserves کَم چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ alpha granules آسان اَتھ منٛز چھِ beta granules آسان تہٕ اَتھ منٛز چھِ آسان protein granules. Alpha granules, beta granules تہٕ protein granules.
यम ति लबनो एमित प्रोकैरियोटिक सेल मन साइटोप्लाज्मस मन तो जन ये अल्फा ग्रेन्यूल यह स्टोर कर स्टार्च ग्रेन्स बीटा ग्रेन्यूल कर स्टोर फैट्स तो एज द नेम इंडिकेट्स प्रोटीन ग्रेन्यूल they store proteins यम स्टोर कर proteins alpha granules they store starch beta granules store fats and protein granules store proteins. These are food reserves which are present in prokaryotic cells. Food reserves. Food reserves. The number next part which is present in prokaryotic cell तेमन वनान यह सा यह inorganic inclusions prokaryotic cell मज या cytoplasmus मज के inorganic inclusions तेमन मज sulfur granules sulfur granules बीच phosphate granules बीच glycogen granules sulfate granules तो बीच iron granules sulfur granules phosphate granules glycogen granules iron granules all these granules they are inorganic inclusions they are also present in the cytoplasm of prokaryotic cell. The part of very important part so cytoplasmus nucleoid. Next part, very important part, so go nucleoid. Now what is nucleoid? Nucleoid क्या go? मैं वने रात इसे prokaryotic cell छे prokaryotic cell में छुईन well developed nucleus इस अमे के nuclear material छा आसान तथ वने nucleoid. It is the nuclear material of prokaryotic cell. इसे prokaryotic cell छे इस अत में nuclear material छा आसान अथ वने nucleoid तो अच्छे बीते नाव के nucleoid अच्छे बीते नाव it is the nuclear material of prokaryotic cell. Nucleoid अच्छे बी नाव nucleoid अच्छे बी नाव nucleoid is also called as achana genophore byak now ya chas vanam prochromosome genophore the byak now chwanat incipient nucleus prochromosome genophore तम सारी नाव न्यूक्लियोइड्स वो सवाल इस न्यूक्लियोइड यह क्या बेसिकली यह असली यह सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड इज सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम को प्रोकैरियोटिक सेल में अकोई क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम यह सर्कुलर बेशी कॉइल्ड सिंगल सर्कुलर कॉइल्ड यह कॉइल्ड क्रोमोसोम अत वो न्यूक्लियोइड वही सवाल अत कस कॉइलिंग कर यह क्या कॉइल्ड यह कॉइल्ड अम सब अत नॉन हिस्टोन्स Coiling is due to non-histones and RNA. अत RNA
बेच नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो तम कॉइलिंग तमिक कॉइल्ड लोपड अत वो यह गो न्यूक्लियोइड वह सवाल अत क्रोमोसोमस मज क्या अत मज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड DNA. This chromosome contains single double stranded DNA. अच्छा single double stranded DNA अत मज अत क्रोमोसोमस मज. ओके तो वो सवाल इस न्यूक्लियोइड अत न्यूक्लियोइडस नेबर किन ब्या DNA रिंग प्रोकैरियोटिक सेलन मज तथ वन नाव प्लास्मिड. ओके shall I try to understand what is plasmid? Plasmid क्या हो? Plasmid is the extranuclear DNA ring. This extranuclear DNA ring present in cytoplasm. This cytoplasm prokaryotic cell अच्छे नेबर किन न्यूक्लियोइडस नेबर किन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन न्यूक्लियर मटीरियल नेबर किन DNA रिंग अत प्लास्मिड. तो यह प्लास्मिड यह इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर DNA तो लिहाजा कर सेल्फ रेप्लिकेट you write it here plasmid is independent on nuclear DNA and hence undergo self replication. You self replication कर यह सेल्फ रेप्लिकेट सेल्फ रेप्लिकेशन कर यह पाने बनाव नई नई कॉपीज यह डिपेंडेंट न्यूक्लियर DNA पे की. दिस इज कॉल्ड प्लास्मिड. वो सवाल समटाइम्स प्लास्मिड टेम्परली जॉइन्स विद न्यूक्लियोइड कुछ साथ प्लास्मिड टेम्परली जॉइन गसन न्यूक्लियोइडस से तो बनावन नो या स्ट्रक्चर तथ वनान episome. Sometimes plasmid joins nucleoid temporarily and form तथ एपिसोम गो यम साथ प्लास्मिड तो न्यूक्लियोइड यह इन जॉइनेड मैनर तथ वनो एपिसोम. वही सवाल यह प्लास्मिड क्या काम कर अत प्लास्मिडस मज जीन्स तम जीन्स दिवान अमिस बैक्टीरियास क्या फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Plasmids have genes which give phenotypic characters to these bacteria. Plasmids मज genes यम दिवान फिनोटिपिक कैरेक्टर्स तो अत मज कस जीन अत मज R फैक्टर अत मज ब्या निप जीन ब्या F फैक्टर R फैक्टर दिवान
resistance to antibiotics, NIP genes करा nitrogen fixation, the number next R factor is help us in reproduction. It is also called as fertility factor. Ishkaram fertility role. Fertility. R factor means fertility factor. Shabash. Gupta to yaad yus plasmid chasan asma chi genes asan. Ishat ke phenotypic characters divan like R factor provides resistance to of bacteria against antibiotics. NIP gene is responsible for nitrogen fixation. F factor is fertility factor, help us in reproduction. So these are the components of cytoplasm. Cytoplasm of prokaryotic cell. The next and last part, that is called appendages. 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 Appendages kya chaman prokaryotic cell asan, bacterial cell asan, kom appendage asan. Appendages gay tim structures which project out of the cell. They are called appendages. Even ch ware appendage asan. Godeki appendage chaman asan flagella. Flagella chaman asan. Yith kunt ch neran even appendages. Yith kunt ch asan yum. Yith kunt. Even mana was flagella. Flagella. Yum flagella kya asan? They are yum ch whip-like asan. Whip-like structures which project out of the cell. Yum cell never ch neran. Yum mana flagella. Using bacterial flagella chasan. Stalk chasan. The one sawal you see flagella chasan. Flagella as much protein asan. Flagella have a protein. Even much protein akasan called flagellin. Flagellin protein. Flagellin chak protein akasan iman flagella hanmaz. Moi sawal is flagella cho at flagella smanchun asnai 9+2 microtubular organization. Flagella have not 9+2 microtubular organization. As flagella should ask the microtubular 9+2 microtubular organization. तो ये पढ़ियो बुझपाम ये 9+2 microtubular organization क्या हो? ये तो बुझपाम पढ़ियो cell organ ली chapter तो ये पढ़ियो flagella structure तो वो शी 9 क्या हो तो 2 क्या हो तो बहरहाल ये चुन यमन आसन ये organization चुन यमन prokaryotic cell मतलब flagella आसन की. Okay. ये गो आख appendage At one was flagella. Doim appendage asan. Temach one sex pili. Ishat beak appendage asan. Yimkesh asan. They are 1 to 4 long, hollow tubes asan. Yimche ach pet sor long, hollow tubes asan. तो ये मच वना सेक्स पिलाई या एफ पिलाई ये मच वना सेक्स पिलाई या शिक वना एफ पिलाई तो मच सवाल यमन मच प्रोटीन आकासन यमन सेक्स पिलाई मच प्रोटीन आकासन तथ प्रोटीनस वनन पिलिन they contain a protein called pillin P-I-L-L-I-N pillin they contain a protein called pillin P-I-L-L-I-N okay. तो वही सवाल what is the role of these sex pili? इम क्या काम करन? इम sex pili च काम करन. They help in conjugation. Sex pili they help in conjugation. Sex pili च काम करन. They help in conjugation. They help in conjugation. इमन च conjugation गसन.
It is a form of reproduction, conjugation. तो अथ मज सेक्स प्ले रोल करान यह गो ब्याक अपेंडेज तो ब्याक अपेंडेज मन तिमन वन फिम्बरी 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 वन तिमन फिम्बरी फिम्बरी यम फिम्बरी क्या फिंगर लाइक आउट ग्रोथस दे आर finger like projections which help in the attachment of bacteria with substratum. यम फिम्बरी दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यम कर बैक्टीरिया अटैच कर विद द सबस्ट्रेटम बैक्टीरिया चाहे यह सानी बॉडी मज बैक्टीरिया कुन कुन अटैच रोजान चाहे सॉइल मज रोज कुन कुन अटैच चाहे आबस मज रोज कुन 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 अटैच रोज तथ सबस्ट्रेटम तथ सम अटैच रोजान विद द हेल्प ऑफ फिम्बरी ओके तो वो सवाल यम फिम्बरी कम 300 to 400 per cell. अकिस सेल 300 पे 400 फिम्बरी. Okay. So this is the structure of bacterial cell, prokaryotic cell, and this was my 4th lecture in cell biology. Now tomorrow, inshallah, I will deliver next lecture, 5th lecture in cell biology. That is about eukaryotic cell. Okay, thank you. Thank you for this good cooperation.